morning, students. In today's class, we are going to start the new chapter of organic chemistry, chapter number 11. Alcohol, phenol, and ether. We are going to start the next chapter. The name of the chapter is Alcohol, Phenol and Ether. Today that is lecture number 1. Lecture number 1. Introduction and classification. Today's lecture number 1 is very nice. Please watch the video till end. L1 introduction, classification. So first of all, let me introduce all three terms: alcohol, phenol and ether. Clear? So alcohol, OH group. Alcohol means OH group. Clear? In IUPAC name, prefix is hydroxy and suffix is OL. Next, phenol. AROH. This group is known as a phenol group. The last one is ether. ROR, R dash, these all are the types of ether. Clear? So let me first of all introduce what is ether. These two groups are known as a alkyl group. Here these two groups are also known as a alkyl group, but this R dash is not equal to R. Both are alkyl group. Clear? AR is known as a aryl group. AR is known as a aryl group. Clear? This kind of ether is known as a symmetrical ether, at where both sides of oxygen have the similar alkyl group. In that case, they are known as a symmetrical ether. And if both sides the different alkyl groups are present, then they are known as a asymmetrical alkyls or asymmetrical alkyl ethers. Clear? And in case of ether, you have to only use prefix. And the prefix is alkoxy, and the prefix is alkoxy. Clear? So this is our today's basic. Clear? First of all, that is introduction. See, I don't need to explain more in details because in the next lecture we are going to learn IUPAC name based on it. Clear? इसके बेस पर से IUPAC name हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. एक बात मैं जो आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज नोट्स रेगुलर बनाओ, काम रेगुलर करो, क्योंकि एक बात कंफर्म है, एग्जाम का डेट नेक्स्ट ईयर भी कभी चेंज नहीं होगा. मतलब आपके पास जो सिलेबस है वो पढ़ने के लिए टाइम कम है, तो आप रेगुलर से लेक्चर्स अपडेट जो हो रहे हैं वो लेक्चर्स देखो, उसके बेस पर से रेगुलर से नोट बनाओ. बहुत सारे बच्चे रेगुलर काम करते हैं, पर जो लोग नहीं कर रहे वो प्लीज शुरू कर दो अपना काम. स्टार्ट करते बच्चों. आगे उसका क्लासिफिकेशन पढ़ाई करना है. आज करेंगे अल्कोहल का क्लासिफिकेशन. तो हेडिंग लगाओ नोट्स में बेटा, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन. जल्दी से हेडिंग लगाओ, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन. क्लियर?
बेटा हेडिंग लगाओ अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। देखो सबसे बढ़िया वाला टॉपिक आ रहा है, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रिक, अल्कोहल किसे बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो याद रखना, इफ ओनली वन OH ग्रुप इज अटैच, सिर्फ एक ही OH अटैच हो तो उसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल, इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्योंकि एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है यहां पर। क्लियर? दिमाग में गया आप लोगों के? ओके, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया वाला टॉपिक है। If two OH group are attached, कितने OH ग्रुप अटैच होने चाहिए बेटा? दो OH ग्रुप। तो उसे क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम 1 2 बेटा लिखते हैं, 1 2 पे OL है और ये इथेन है, तो इथेन 1 2 डायोल। ये हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल। तीसरा वाला लेते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, उस केस में याद रखना है, if 3 OH और हाइड्रोक्सी ग्रुप्स are attached। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। इसका नाम आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था। आपने क्लासिफिकेशन किया पर किसके बेस पर से किया? नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर से। तो लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप। क्लियर? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल के बारे में, पर उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। With the last classification of alcohol based on the type of carbons which it attached. So first of all, primary alcohol, or it's also known as a 1 degree alcohol. In this, OH is attached with a carbon and this carbon is attached with one more carbon. And this kind of alcohol is known as a 1 degree alcohol. Let's learn secondary alcohol, also known as a 2 degree alcohol. In case of 2 degree alcohol, OH is attached with a carbon and this carbon is attached with 2 more carbon. Or you can say that when OH is attached with a secondary carbon,
then alcohol is known as the secondary alcohol. Tertiary alcohol or 3-degree alcohol. This is an example of 3-degree alcohol. Now one more is that super primary alcohol or 0-degree alcohol or methyl alcohol. All four valencies are completed by hydrogen only. One extra example. When OH is attached with the allylic carbon, then this alcohol is known as a allylic alcohol. Now see, whenever we are going to start the next reaction mechanism, but before it you have to remember one thing, whenever there is a primary alcohol, break the bond between O and H. याद रखना बच्चों, जब भी प्राइमरी अल्कोहल आए तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है. इस केस में डिपेंड करेगा रिएक्शन सिचुएशन पर. यहाँ पर कंफर्म याद रखना है आपको C एंड O का बॉन्ड ब्रेक करना है. अगर ये सारी बात आपके दिमाग में उतर गई, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. 1 डिग्री अल्कोहल में OH का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा. 2 डिग्री में रिएक्शन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा. टर्सरी में मोस्ट प्रोबेबली C एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है. बस ये दिमाग में एक बार बिठा दो. उसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर L2 हम लोग पढ़ाई करेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल. क्लियर. आज का लेक्चर फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ. शुरुआत किया था क्लासिफिकेशन, उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े थे. इंट्रोडक्शन में पढ़े अल्कोहल, जहां पर हाइड्रोक्सी एज अ प्रीफिक्स एंड OL एज सफिक्स यूज होता है ये. और उसके बाद आया था फिनॉल, AROH. उसके बाद था ईथर, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर. डोंट वरी, वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल. उसके बाद जो टॉपिक था बच्चों वो था क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में आप लोग क्या पढ़े थे? क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा था कि पहले पढ़ा टाइप ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच विथ इट. क्लियर. अगर एक ही OH अटैच होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 OH अटैच होगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH अटैच होगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. उसके बाद पढ़े आप लोगों ने OH अगर किस टाइप के कार्बन के साथ अटैच है उसके बेस पर से उसका क्लासिफिकेशन. तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, सुपर प्राइमरी, 0 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल. उसके बाद आप लोग पढ़े एलाइलिक अल्कोहल. तो आज का जो कंसेप्ट था बेटा वो था सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का. कल से कंप्लीट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. हेलो अल्केन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है. प्लेलिस्ट में जाके निकाल कर उसका रिवीजन लगाओ एक बार. अल्कोहल वाला चैप्टर चल रहा है तो साथ साथ में वो भी स्टार्ट करो बेटा. सॉल्यूशन का मैं लेक्चर साथ में देने वाला हूँ, सो डोंट वरी, उसका चिंता मत करो आप लोग. तो जो उसका रिवीजन नोट्स है वो भी आएगा, उसका रिवीजन लेक्चर्स भी आएगा. आप रेगुलरली लेक्चर्स जो अपडेट हो रहे हैं आ रहे हैं वो कंफर्म देखो. थैंक यू बेटा.